So good morning, everyone, and welcome to this webinar on the Knowledge Bites Market Kya Lagta Hai. I am Pratik Jain, and I head the products for the Anand Rathi Digital Wealth. Uh, Today's session, so as I mentioned last time, right? Last time we did a session on the portfolio review formats, right? That how we can actually review the client's portfolio outside AR and how we can actually show him certain data points, which can help the client to know his overall health of his overall portfolio. How is it performing? And by realigning, how it helps him, right? That is something which we covered in the last session. These are three learnings which I mentioned last time, right? Which helped our partners in actually growing their business last year. So these three activities is something which majorly were done by our partners, which was uh, portfolio reviews, knowledge bites, and the marketing activities. We covered the portfolio review last time. Thanks, Joel. We covered the portfolio reviews last time. Today we'll cover the knowledge bites, and we'll have next session mostly on next Saturday or on 15th, in which we'll cover the marketing activities. It's like how the marketing activities can help each and every partner in generating and creating more leads, which ultimately leads to more clients and more business, right? That was the plan. So today we'll cover on knowledge bites, market kya lagta hai. So there are two notes which I will cover today. One is the equity market view. This note is something which we release every month, right? It's a monthly update. We've been doing this since I think so August 20th. Like post the pandemic, we've been releasing these notes every month, right? The major factors which are covered remain the same. The data is updated, but I think so this data points, if we can actually discuss with the client, he would understand that what is the market view and what we should do. But ultimately, it's an actionable which the partner and the client has to do. कि आज क्या करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यार मार्केट में आज डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, या इजराइल हमास का वॉर है, या इलेक्शन है, या बजट है. सी देयर आर वेरियस इवेंट्स व्हिच कम थ्रू द एंटायर ईयर, राइट? नाउ हर बार मेरी स्टोरी कुछ अलग नहीं हो सकती है. ऐसा नहीं है कि मैं आज कुछ और देख रहा हूँ, कल कुछ और देखूंगा, परसों कुछ और देखूंगा. दैट्स अ वेरी इनएफिशिएंट वे, राइट? There are certain parameters which impact the economy. There are certain parameters which impact the economy in the long term, certain impact in the medium term, certain impact in the short term. So ये bifurcation करके अगर आप client को अगर कुछ data point with regular frequency अगर हम बता सकते हैं, which even the client can track, I think so that creates a very good impact. We have experienced it. The client has also experienced and actually valued that. And he also knows कि यार क्या देखना चाहिए, because ultimately whenever we go and speak to a client, right? We all, whenever we go and speak to a client, और हम जब बोलते हैं client को कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम सब बोलते हैं कि सर ये 5 साल का व्यू है तो ही आप इन्वेस्ट करो, आप मत करो शॉर्ट टर्म के लिए, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक सो एवरीवन गोज एंड स्पीक्स. पर ये 5 साल की जर्नी के थ्रू में बहुत सी चीजें होने वाली है, राइट? How to actually navigate through this journey of 5 years. I think so that is the most critical part, and that's where our role comes in as advisors, as distributors, right? So this data point will definitely help you when you discuss with clients. And अगर आप हर month या हर quarter में आप उसको एक update भी दे सकते हो on these things, I think so the client values it, because as a investor, he needs to know only these things, because this is something which is going to help him create wealth in the long term. हर रोज मार्केट में क्या हो रहा है, आज ये हुआ कल ये हुआ, उससे उसका वेल्थ नहीं क्रिएट होने वाला है. दैट ट्रेडिंग इज समथिंग व्हिच वी आर नॉट डूइंग, राइट? वी आर डूइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक सो दैट नोट में पॉइंटर्स जो है ये अगर आप समझ सकते हो, एंड जस्ट वी हैव टू inform the client that sir this is the update. I think so that is something which is valued by all the clients. So I will cover that note, and I'll also cover on the mandate 24. The result is going to be out on 4th. बट ये नोट हमने एक्चुअली 6-8 महीने पहले इशू किया था, उस पर एक अपडेट भी है, राइट? सम पार्टनर्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद अस, आई थिंक सो इन 2018-19 में आल्सो वी हैड अ सिमिलर नोट, राइट? बट दैट नोट हैज रियली हेल्प्ड. सो ये नोट भी जो है मैं उस पर अपडेट जो एक्सप्लेन करूंगा. आई थिंक सो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डेफिनेटली speak with your clients. It would help, right? So without further delay, I think so I'll start the presentation. Just let me share my screen.
So I'll cover one note and then we can, I'll cover both the notes and then probably we can open the floor for questions. So I'll cover both the notes. So first one, of course, is the equity market view. I hope the screen is visible. Anyone can just confirm and then I'll start quickly. I hope it is visible. The screen is visible. Yeah, thank you. Thanks, Raj. So equity market view. Now, here what we've done is, यहाँ पे तीन parts में bifurcate किया है. One is what are the factors which impact in the long term, what are the factors which impact in the medium term, and what are the factors which impact in the short term, and what do you need to look at. If this thing, ये मतलब अगर number सही है, then I think so we are on track to grow at a particular number. Nifty can grow at a number in the long term. Nifty can grow at a number in the medium term. तो क्या देखना चाहिए? I think so वो बहुत critical है. But उसके पहले है ना, equity का एक बहुत बड़ा perceived risk है. That equity is risky. I think so most of the clients अगर बात करते हैं जिसने fresh start किया है या जिसने नहीं invest किया है या उसका एक experience खराब रहा है in direct equity और in mutual funds, उसको लगता है equity बहुत risky है. But data, as we always say, right, we speak a lot of data. So data अगर देखे, so last 24 साल का रिटर्न्स लिया है, कैलेंडर ईयर का रिटर्न्स लिया है ऑफ निफ्टी 50. Out of 25 years, only 5 instances have been there where Nifty has delivered negative returns. 20 instances out of 25, मतलब 80% of the times Nifty has delivered positive returns. So जो perceived risk है यार कि equity बहुत risky है, equity negative returns देता है, सर अगर 25 साल का डेटा देखते हैं तो 80% of the times Nifty has delivered positive returns. Compounded annual returns is almost 12%. So equities are actually not that risky. एक perceived risk जो है is something which we can break this myth of a client by actually showing him this data. कि सर लास्ट अगर 25 साल का डेटा देखे तो 20 साल में तो मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है सर इन दैट कैलेंडर ईयर. ओनली 5 times when the Nifty returns have been negative. तो ये अगर ये उल्टा होता तो then probably that risk is actually justified, but actually it is not. Only 5 out of 25 times it is negative, 20 times out of 25 times it is positive, and the returns are 11.5. So equity actually is not that risky जितना perceive risk है. Then as I said कि factors जो impact करते हैं, तो मैं जब market क्या लगता है, I think so इसको break करना बहुत जरूरी है कि market क्या लगता है सर. तो सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, मीडियम टर्म के लिए क्या है एंड शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, ये फैक्टर्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. लॉन्ग टर्म में इट इज ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच हैव अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन मार्केट्स. मीडियम टर्म में इट इज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स वैल्यूएशन प्लेज अ मेजर रोल्स. शॉर्ट टर्म व्हिच इज 1 to 3 months स्पेसिफिकली दैट इज न्यूज एंड इवेंट्स ड्रिवन और सेंटिमेंट्स ड्रिवन, राइट. सो ये ब्रेक करना पहले बहुत क्रिटिकल है कि सर लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर अगर देखें तो ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्ट सबसे ज्यादा करते हैं. Medium term is 1 to 3 years, जहाँ पे corporate earnings and valuation plays a major role. Short term is where your news events and sentiments have a major impact. So duration is critical. So when we say that sir client आप 5 साल के लिए देख रहे हो सर, तो medium and short long term is something which is more critical. Short term में events जो है वो तो आएंगे ही सर 1 से 3 महीने में, but that is not going to play a major role. Long term का अगर trend अगर मैं सही पकड़ सकता हूँ वो बहुत critical है. And उसके लिए क्या factors देखने चाहिए. If we can explain those factors to a client, I think so that will give him a much more clear picture that where the markets are headed. So let's break this and let's look at each parameter. Let's look first at the long term कि macroeconomic outlook क्या है. तो यहाँ पे 3-4 parameters देखते हैं. First one is the GDP number. कि GDP growth क्या है. I think so you all would know. Yesterday only there was the number which came in for the fourth quarter of FY24. So 7.8% का growth था. Last year the GDP growth was 8.2%. We were expecting a 7.6, 8.2% का growth आया है, which is very good, which is above expectation, right? So the economic growth has been above expectation. Next year the growth expectation is 7%. This is in real terms, ये nominal terms में नहीं है, तो inflation का impact निकल चुका है. This is real growth in GDP. 8.2 was the number for last year. This financial year, the expectation is 7%. Of course, as numbers come in, this might revise, but 7% is the number. Now, this 7% is again the fastest growing economy in the world.
So last year also we were the fastest growing economy. This year also the expectation is that we would be the fastest growing economy in the world. So trend क्या बता रहा है कि sir world में we are expected to be the fastest growing economy. So that is positive. Of course it is positive, right? If we are expected to grow the fastest, then यहाँ पे invested रहूंगा तो मेरा returns also is expected to be one of the highest and one of the fastest, right? ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है मार्केट ग्रो नहीं होगा. ऑफ कोर्स दे डू मिरर एंड देयर इज वन डेटा पॉइंट व्हिच आई शो जो इसका कोरिलेशन भी दिखाता है. बट जीडीपी नंबर ग्रोथ is expected, fastest growth is expected. That is very positive, right? And this data point is something which even the client can see. मतलब अगर वो हर क्वार्टर नंबर आता है, and this number is something which अगर नंबर भी अगर हम हर क्वार्टर या हर 6 months अगर डिस्कस भी कर ले क्लाइंट के साथ, आई थिंक सो इवन ही कैन रिमेंबर दैट नंबर. 7% ग्रोथ हो रहा है मतलब सर दैट्स अ फेयर नंबर. वी आर स्टिल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. सो दीज नंबर्स आर इजी फॉर द क्लाइंट ऑल्सो टू मेजर एंड ट्रैक. ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नंबर दिखा रहा हूँ जो पब्लिक फोरम में है नहीं. This number is something which is very easy for the client also to track, for you also to track. And if you can give an update to him, I think so this definitely creates an impact. So GDP number definitely positive. The second important parameter which we are looking at every month also and every quarter is the inflation number, right? So 23-24 ka inflation number, the expectation was 5.4. Next year the expectation is 4.5. So inflation ka agar trend dekhe to 22-23 mein it was 6.7. 23-24 it is 5.4. 24-25 it is 4.5. Last month का number it was around 4.8, right? RBI का जो range है it is around 4%. Expectation है कि by September 24 I think so we might touch that number of 4%. So inflation also is something which is critical because inflation impacts, right? अगर महंगाई ज्यादा है तो वो impact करती है, growth को impact करती है. Inflation is expected to come down. That's the expectation for this financial year. And this is RBI estimate. This is not my estimate. ये RBI की estimate है. ये 4.5 तक जा सकता है for this financial year. 4% तक RBI के टारगेट पे आ सकता है by September. So that's also positive. अगर inflation कम है, growth का जो मेरा expectation है, that looks also positive. So this adds value. ये aid कर रहा है, मेरे growth को aid करेगा, ये मेरे growth को disturb नहीं करेगा. That's what the number is looking at. Again, an important number and easily trackable number, which is inflation, right? Third, which we are looking at is the performance. That is the growth. कि tax collections में क्या growth हो रहा है, right? So last year, the direct tax collections, income tax collections were higher by 22%. The GST collections were higher by 12.7%, right? So ये number तो grow हुआ है, right? This is also something which is trackable every month. GST का number हम हर महीने हम इशू करते हैं जैसे ही नंबर आ जाता है, राइट? सो लास्ट ईयर अप्रैल का नंबर वाज द हाईएस्ट. आई थिंक सो जीएसटी फॉर मे विल बी आउट टुडे. कल आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन द नंबर बट आई थिंक सो इट शुड बी आउट टुडे. सो दैट नंबर इज अगेन looked at closely के यार 1.7 1.8 या 2 lakh crore. So growth is there in GST, growth is there in income tax. Now ये growth कब होता है, कब income tax number grow होगा, right? When you and I will pay more tax. जब अपनी इनकम ज्यादा होगी then only will pay more tax. When will corporate pay more tax? जब उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा then only they'll pay more tax. जीएसटी कब ज्यादा होगा, जब गुड्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, राइट? प्रोडक्शन ज्यादा होगा then only जीएसटी नंबर विल बी हायर. सो लॉजिक है ना कि अगर ये नंबर में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है जो लास्ट ईयर भी हुई है, इस साल भी अनदर 11.5-12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन टोटल टैक्स, means the corporates are expected to grow their profits. The GST number is expected to grow, means my movements is going to be higher, my goods production is going to be higher. If my income tax number is expected to grow, means the individuals would be earning more, that's why they'll pay more tax. So अगर tax collection number grow हो रहा है, ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का कि जीडीपी नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो तो हाई लेवल है, बट जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स गिव्स एन इंडिकेटर कि यार अगर ये ग्रो हो रहा है मतलब मेरी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है. तो इकोनॉमी ग्रो होने वाली है तो देन बॉस ऑफ कोर्स इफ द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो द मार्केट्स विल आल्सो ग्रो, राइट? ये ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो होगी और मार्केट्स ग्रो नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज इज ग्रोइंग, वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली इंपैक्ट दिखेगा, राइट? सो टैक्स कलेक्शन नंबर अनदर क्रिटिकल नंबर कैन बी ट्रैक रेगुलरली. ट्रेंड तो यही दिखा रहा है कि यार ये 11-12% ग्रो होने वाला है. लास्ट ईयर भी 12.5% ग्रो हुआ था. वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग 11.5% ग्रोथ, राइट? सो दैट इज पॉजिटिव. फिस्कल डेफिसिट नंबर, yesterday the government announced the deficit number 5.9 का expectation था last year का, it came at 5.6, so that's also better than expectation.
आरबीआई ने जो ट्रांसफर किया है, इट इज 2.1 लाख करोड़ वर्सेस 0.9 लाख करोड़ इन लास्ट ईयर. सो दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज अगर आरबीआई ने ज्यादा ट्रांसफर किया है, मींस the the government will have to do less borrowing. Less borrowing has an impact on the 10-year bond yield. So everything is linked. Fiscal deficit of course 5.6 था, so next year मतलब current year का 5.1 है. अगर इस last year का ही कम आया है तो this year also I think so the government might do better, right? If the revenue number increases, the fiscal deficit जो number दिया है 5.91 का, it might be better than that. So that's also positive from the market and the economy level. नाउ गवर्नमेंट बोरोइंग कम आती है तो उससे क्या होता है कि एवरेज बॉन्ड यील्ड जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट कर लिया था. जब आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड पे किया, आई थिंक सो इट वाज लास्ट वीक, the 10-year GSEC bond yield actually dropped from 7 मतलब 7.0405 था, it came to 6.97 6.98. Now a lower bond yield actually is positive for equity. ये पॉजिटिव कैसे होता है? बिकॉज इक्विटी मार्केट का जो वैल्यूएशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द करंट इंटरेस्ट रेट्स, द 10-year GSEC. तो अगर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, जो मेरी फ्यूचर की अर्निंग्स है, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाता हूं, तो मैं करंट 10-year GSEC पे डिवाइड करके उसको करंट वैल्यू पे लाता हूं. अगर 10-year GSEC ड्रॉप हुआ है तो मेरा इक्विटी वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है, बिकॉज माय डिस्काउंटिंग फैक्टर हैज रिड्यूस्ड. सो दैट आल्सो हेल्प्स इन बेटर इक्विटी वैल्यूएशन. सो पॉइंट व्हाट आई वांट टू ड्राइव हियर इज, first, we looked at the GDP number, that is positive. Inflation is coming down, that is positive. The tax collection number, which can be an indicator of how the economy is growing, इसको हर महीने ट्रैक कर सकता हूँ क्योंकि जीडीपी का नंबर तो क्वार्टरली आता है. इन्फ्लेशन एवरी मंथ, टैक्स कलेक्शन एवरी मंथ. दैट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11.5-12%. सो दैट्स पॉजिटिव. अगर ये नंबर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, then it is an indicator that the economy is growing. Fiscal deficit का नंबर जो आया है, of course we've seen that that number is better than what the government said. That's again positive because deficit कम है, मतलब government can spend more, right? It can increase spending. So that is again positive. Average 10-year GSEC bond yield. So government की borrowing कम हुई तो 10-year GSEC कम हो गया. 10-year GSEC bond yield dropped to 6.97. That's again a positive factor for the equity because आपका discounting factor कम हो गया तो equity valuation बढ़ जाता है, right? So with better investor का confidence अगर आया है तो FII flow ज्यादा होता है. So all these factors are indicating that boss the market is looking positive. Another correlation हमने जो देखा था, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जीडीपी ग्रोथ और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस. तो हमने क्या किया, हमने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लिया और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस लिया. इसको ब्रेक किया है 2001 to 2011, 10 साल का पीरियड लिया, 11 to 21 एंड 21 to 24. ये नंबर क्या बता रहा है कि 0 from 2001 to 11 GDP growth was 13.6, Nifty grew at 17.7. Nominal GDP in 11 to 21 grew at 10%, Nifty delivered almost 10%. 21 to 24 GDP grew at 14%, Nifty delivered 15%. Nominal GDP is nothing but the real GDP, जो हम expect कर रहे हैं 7-8%, plus the inflation which is around 4.5 to 5%. So we are expecting around 11 to 12% GDP nominal terms में GDP growth का expectation है. So अगर लास्ट ये 24 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो ये क्या दिखा रहा है कि यार देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कि यार नॉमिनल जीडीपी ग्रो हो रहा है तो निफ्टी का रिटर्न्स इज आल्सो मिररिंग, राइट? अगेन टुडे आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार 7% का ग्रोथ है से दिस ईयर, प्लस द इन्फ्लेशन व्हिच आई ऐड ऑफ 4 to 5%, अनदर 11-12% ग्रोथ इन जीडीपी. सो वी एक्सपेक्ट निफ्टी उतना तो डिलीवर कर ही सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. सो दिस नॉमिनल टर्म्स में अगर हम मैं जीडीपी का नंबर देखूं क्या जीडीपी ग्रो हो रहा है, सो मेरा मार्केट ने तो पहले मिरर किया है कि कोरिलेशन दिख रहा है तो आगे भी करेगा. सो अगर जीडीपी ग्रो हो रहा है तो मेरा मार्केट भी डिलीवर क्यों नहीं करेगा, राइट? सो दिस अगेन वन मोर डेटा पॉइंट विच सजेस्ट दैट बस ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूं इक्विटी मार्केट के व्यू से, तो जीडीपी इज पॉजिटिव, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, tax collection growth is there, so that indicates that boss economy is on track, fiscal deficit is lower, government borrowing is lower, so your 10-year GSEC yields have dropped to 6.9. that again aids equity market valuation. GDP and nominal GDP and Nifty 50 का जो number है, returns है and जो GDP growth है,
That has also shown strong correlation. So this again data point shows यार कि अगर nominal GDP अगर सर 11-12% पे अगर expect हो रही है grow होने का, because India is expected to grow to be the fastest growing economy over the next 5 years. This is not what RBI is saying or what Anand Reddy is saying. I think so everyone is saying, right? So अगर GDP grow होगा तो Nifty सर correlation जो देख रहा है तो Nifty भी grow होगा. So if that is there, then that's a positive outlook which is there on the overall Indian market. So इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म व्यू से अगर मैं ये 5 चीजें देखूं तो सर डेफिनेटली दिस लुक्स वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? दैट्स द फर्स्ट पार्ट कि लॉन्ग टर्म के व्यू से क्या दिख रही है, क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, वो सब पॉजिटिव दिख रहा है. सो दैट्स ऑन द लॉन्ग टर्म व्यू. नाउ कमिंग टू द मीडियम टर्म व्यू विच इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन. Now, यहाँ पे है ना, what we've been doing, and I think so you will all resonate, all the partners who have been associated with us, we are looking at these two things very closely, which is the Nifty earnings and the P multiple. So, मार्केट क्या लगता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. सी सब्जेक्टिव टर्म्स में हम बहुत सी चीजें बता सकते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है. पॉइंट इज there has to be a proper measure in deciding or calculating that what's the reasonable level of Nifty. Subjective terms में we can speak a lot of things, but it doesn't give confidence. I think so data gives a lot of confidence, of course, to you also and to the client. And if we speak in data, I think so that really helps. So there are two parameters which we've been tracking continuously. One is the EPS number and the other is the P multiple. Valuation के लिए मुझे अगर value करना है निफ्टी का करंट रीजनेबल लेवल क्या है, सो देयर आर टू पैरामीटर्स व्हिच वी आर लुकिंग एट. वन इज द अर्निंग्स एंड द अदर इज द रीजनेबल पी मल्टीपल. नाउ ये दो चीज क्या है? तो अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 भी लिया है हमने, मिड कैप स्मॉल कैप भी लिया है. लेट्स स्टिक टू निफ्टी 50 के. निफ्टी 50 की कंपनीज सब मिला के कितना अर्न कर रही है कि फॉर वन यूनिट मतलब वन शेयर ऑफ निफ्टी व्हाट इज द अर्निंग of all those 50 companies put together, right? That is EPS के यार एक रुपए की अर्निंग कितनी है, उसकी EPS कितनी है, मतलब कितना कमा रही है for one share. That is what EPS gives me. Price to earning multiple is basically उस एक रुपए की अर्निंग के लिए मैं क्या प्राइस पे कर रहा हूं. That's the PE ratio. तो अगर 10 रुपए की अर्निंग है और 100 रुपए की प्राइस है, मतलब मैं एक रुपए की मतलब 100 डिवाइड बाय 10 which is again of course 10. So for 1 unit of earning, I am paying 10 rupees. That is what P multiple gives me. So it's a valuation metric which we have been using, which is the P multiple. So earnings and P multiple. Another important factor which we need to look at when we look at earnings is that you should always look at forward earnings, because जो earnings हो चुकी है, that is already there in the price, because market is very dynamic. Market wait नहीं करता है. Classic case अगर देखना है तो देख सकते हैं कि जब कोविड आया था in March 2020, market dropped to 7,600. उस टाइम पे अर्निंग्स पे इंपैक्ट नहीं आया था, राइट? इट वाज नॉट दैट, वो क्वार्टर तो ठीक ही था, मतलब सिर्फ लास्ट के 10-12 दिन जब लॉकडाउन लग गया था, बट अदरवाइज जैन फेब वर नॉर्मल मंथ्स. बट मार्केट स्टिल करेक्टेड बिकॉज मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स फ्यूचर. पास्ट इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस. मार्केट ने फ्यूचर डिस्काउंट क्या किया कि यार कोविड आया है, दिस इज समथिंग व्हिच इज एन अननोन थिंग, वी डोंट नो हाउ टू लिव विद इट. इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं है. That's why market anticipated डिस्काउंट किया फ्यूचर को, कि फ्यूचर अनसर्टन है, पता नहीं है, इसलिए मार्केट करेक्ट हो गया, 7,600 हो गया था इन March 20. Then as and when things happened, market recovered. We had hardly 100 cases in March 20. But March 21 देखे तो कोविड के ऑलमोस्ट 3-4 लाख केसेस थे दिन के, बट मार्केट नहीं करेक्ट हुआ. Why? Because now market knew and we also knew that बस कोविड के साथ कैसे जीना है, how we have to fight it. Vaccination आ गया था, things were improving. So market, what this gives a signal क्या है कि market तो future discount करता है. तो you should always look at forward earnings and forward PE multiple. Past is already there in the price. तो यहाँ पे whenever we look at earnings, we look at the forward earnings for this year and the next year, right? That's how the market also reads and market also reacts. So if we look at the earnings, so लास्ट टू लास्ट ईयर का जो निफ्टी 50 का अर्निंग था वाज 839. लास्ट ईयर का नंबर इज 1048, which was a 25% growth. This year, the year which has started, right, from April 24 to March 25, there is an expectation that 11% growth expected है. The EPS number will come to 1164. And next year, this is
FY26, that is April 25 to March 26, the EPS growth expected is 14%. And of course, subsequently in mid cap and small cap also, the numbers are there. This year, the expectation is 20 to 22%, and next year the expectation is 18%, right? Now, what these numbers actually tell me? तो मैंने EPS नंबर तो देख लिया कि यार earnings तो expected to grow at 11 to 14% for Nifty 50. Now इस नंबर से मुझे क्या पता चलता है? तो earnings per share तो पता चल गया, P रेशियो भी देखना है मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि रीजनेबल लेवल क्या है. So for reasonable valuation of Nifty, what we've done is we've also looked at the interest rate environment. मतलब जो 10-year GSEC का जो मैं नंबर बता रहा था कि भाई उससे भी मार्केट का मल्टीपल जो है वो इंपैक्ट करता है. व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप, व्हेन द 10-year GSEC इज गोइंग डाउन, द मार्केट वैल्यूएशन इंक्रीजेस. दैट्स व्हाट आई सेड, बिकॉज आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो कम हो जाता है. तो सेम नंबर को अगर मैं लोअर डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी. दैट्स व्हाई द इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन इज इंक्रीजिंग व्हेन द इंटरेस्ट रेट रेजिम इज लोअर. सो हियर व्हाट वी हैव डन इज कि यार फॉरवर्ड पी मल्टीपल जो है वो कैसे निकालूं. See, I can take a number. We further went into more detail. It's like before this year, we were just taking an average. कि भाई last 15 साल का क्या average है, which was around 20. So that number was something which we have been using. We said let's get into further details. इसको interest rate से भी और link कर सकते हैं, because that is something which is a more logical trend and conclusion. So what we've done is कि यहाँ पे हमने interest rate environment देखा, last 17-18 साल का डेटा देखा है. इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट देखा कि एवरेज 10-year GSEC का यील्ड क्या था. सो 8.2 वाज वेरी हाई, 7.7, 7.4, 7.2 and 6.7. We bifurcated this in 5 interest rate scenarios: very high, high, average, moderate, low. We are currently in the moderate to low tenure, but last 18 साल में तो सब चीजें हुई होगी. तो वेरी हाई था जब फॉरवर्ड पी मल्टीपल वाज 15.6. दिस क्लियरली इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं आपका पी मल्टीपल कम होता है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रेट कम होते जाते हैं आपका पी मल्टीपल इज इंक्रीजिंग. सो करंटली वेयर वी आर बेसिकली, राइट, वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, एवरेज एंड मॉडरेट. वो एवरेज से the forward P multiple comes to 19.6. That's the multiple which we have. कि यार आज की तारीख में एक reasonable P multiple अगर देखूं तो 19.6 है for Nifty, 28.6 for Nifty mid cap, 22.6 for Nifty small cap. This is based on the interest rate environment which we've seen over the last 18 years, right? Last 16 years, sorry, 16 years का हमने जो डेटा लिया है उसके बेसिस पे एक रीजनेबल पी मल्टीपल क्या होना चाहिए जिसपे निफ्टी ट्रेड करना चाहिए, राइट? सो व्हेन आई मिक्स बोथ पी मल्टीपल एंड रीजनेबल एंड द ईपीएस, आई गेट अ रीजनेबल लेवल ऑफ निफ्टी, कि आज की तारीख में निफ्टी क्या ट्रेड करनी चाहिए एंड 1 year फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ निफ्टी. दैट्स द ऑब्जेक्टिव एट लुकिंग एट द ईपीएस एंड द पी मल्टीपल. इट गिव्स मी अ नंबर ना. मैं एक ट्रेंड देखने चाहता हूँ या मैं एक नंबर दिखाना चाहता हूँ कि सर आज की तारीख में आज मार्केट रीजनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले तो वो चेक करना है. वी कैन स्पीक इन सब्जेक्टिव टर्म्स कि नहीं सर मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट अंडर वैल्यूड है, बट इट डजंट गिव कि कितना ओवर वैल्यूड है या कितना अंडर वैल्यूड है, राइट? दैट्स अ सब्जेक्टिव टर्म. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई दैट नंबर बाय यूजिंग 2 key metrics. One is the EPS number and the other is the P multiple. Now ये दोनों से मैं क्या ट्राई कर रहा हूं फाइंड करने का कि सर आज की तारीख में मार्केट रीजनेबल है कि नहीं, राइट? एंड 1 year फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द रीजनेबल लेवल ऑफ निफ्टी बाय यूजिंग दीस 2 multiples, राइट? आई गिव यू द लॉजिक के ईपीएस नंबर कैसे देख रहे हैं एंड व्हाई यू शुड लुक एट फॉरवर्ड नंबर्स. अगेन व्हाई शुड लुक एट फॉरवर्ड पी. आई गिव यू एन एग्जांपल कि भाई कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर, पास्ट इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस. सो ये दो मल्टीपल, ये दो वेरिएबल्स को अगर मैं मिक्स करूं तो आई कैन गेट कि यार मार्केट आज क्या लेवल पे होना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑफ कोर्स 22,900 का लेवल. आई थिंक सो टुडे निफ्टी इज अराउंड 22,600, 600, 700 है. सो अगर आज का लेवल लेवे, रीजनेबल पी वाज 19.6 फॉर निफ्टी, मुझे आज का लेवल देखना है तो मैं ये करंट ईयर का ईपीएस नंबर लूंगा और उसको पी से मल्टीप्लाई करूंगा. सो 19.6 into 1164 आपको फेयर वैल्यू आता है 22,800.
आज निफ्टी वहीं पे है। तो सर रीजनेबल लेवल ऑफ निफ्टी आज क्या होना चाहिए? तो 22,800 होना चाहिए सर। आज निफ्टी 22,500 22,600 है। सो वी एट अ फेयर लेवल, देयर इज नो फ्रॉथ एज सच कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या मार्केट अंडर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड भी है तो मैं यहाँ पे नंबर में बता सकूंगा। अगर निफ्टी आज सपोज 24,000 हो जाती है एक महीने बाद, सो वी कैन सी यार कि सर मार्केट सर इट इज ओवर वैल्यूड बाय 4-5%। रीजनेबल लेवल 22,800 है आज की तारीख में। तो मार्केट 22,500 22,600 है, तो मार्केट में फ्रॉड नहीं है, मार्केट इज एट अ रीजनेबल लेवल। बट वेन एवर द क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर, वो आज के लिए तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। आज के लिए तो इन्वेस्ट करने में सिर्फ ये पता चल रहा है कि आज इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। तो ये ही एक साल बाद, मतलब मार्च 25 का अगर लेवल देखना है मुझे, तो मुझे मार्च 25 से एक साल की आगे की अर्निंग्स देखनी पड़ेगी, विच वॉज 1326 मल्टीप्लाई बाय द पी विच इज 19.6, मतलब फेयर वैल्यू आता है 26,000। मतलब सर बेस्ड ऑन द अर्निंग्स मार्च 26 sorry March 25 Nifty should be at 26,000. Today we are at 22,500 22,600 based on the earnings, which is expected to grow at 14%, right? Nifty should be at 1326, 14% this year, 11% next year. तो 1326 का नंबर होना चाहिए सर, मल्टीप्लाई बाय द रीजनेबल पी विच इज 19.6, 26,000 का लेवल होना चाहिए सर निफ्टी का ऑफ मार्च 25, which is a 13% growth from the current level. So this gives an indicator कि सर आज मार्केट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है based on the earnings. So सर fairly valued है, there is no froth in the market. Forward क्या लग रहा है सर? तो 13 to 14% growth का expectation है in Nifty 50, right? That's also something which is positive. So should I invest today or not? Of course we should invest, because what we are expecting a 13-14% growth. No, we are not expecting a 2-3% growth. 13-14% growth, and based on what? Based on the earnings of Nifty 50 companies. So there is a fundamental reason behind how these earnings are going to grow and how this company is going to grow. It is not on कि सर नहीं मुझे अच्छा लग रहा है मार्केट, शायद ये हो सकता है ये हो सकता है। बॉस इफ वी लुक एट एंड इफ वी कैन यूज दिस फ्रॉथ कैलकुलेशन, वी हैव बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट 4 years, मतलब अगस्त 20 से हम यही यूज कर रहे हैं, एंड वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस टर्म्स ओनली विद द क्लाइंट। आई थिंक सो आप एक बार दो बार तीन बार क्लाइंट से बात करोगे, इवन ही विल बी एबल टू ट्रैक। सो सब्जेक्टिविटी निकाल रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव वे में अगर हम बता सकते हैं कि सर मार्केट क्या लगता है, राइट? आई थिंक सो दैट इज समथिंग विच विल बी मोर वैल्यूड बाय द क्लाइंट, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी। सी ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी। आप भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर निफ्टी का ईपीएस नंबर क्या होना चाहिए, तो सर करंट फाइनेंशियल ईयर का नंबर इज 1164, नेक्स्ट ईयर का नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 1326, सर रीजनेबल पी क्या है 19.6। तो अगर सर मल्टीप्लाई करूं, वैल्यूएशन मॉडल है सर, सो पी इंटू ईपीएस आई गेट द मार्केट वैल्यू। सो करंटली सर 22,800 का लेवल इज अ फेयर वैल्यू। एक साल बाद का सर नंबर 26,000 दिख रहा है। आप आज का जो लेवल है वो आप डाल सकते हो, एंड यू कैन कैलकुलेट कि सर फ्रॉड है कि नहीं है, राइट? दिस वे यू कैन एक्चुअली टेल हिम रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव कि यार सर नहीं इलेक्शंस आ गए हैं या ये चीज हो नहीं सकती है या ये चीज हो सकती है। We don't know what the impact is. I think so if we stick to something which is a much more easier and a measurable and an objective method, I think so that would help. This has helped us and it has helped our partners, of course, in getting more monies from the client. So 1 year outlook from the equity in the medium term is also positive, right? If we expect that Nifty to deliver 11-12%, the mutual fund should deliver an alpha of 2 to 3%. So we are expecting that we should have a 13-14% returns over the Nifty in the 1 year. So even that trend is looking positive. So long-term perspective हमने देखा, that was positive, where we looked at GDP, we looked at inflation, we looked at tax collections, we looked at the fiscal, we looked at the bond yields. Everything was positive. We looked at the correlation between the nominal GDP and the Nifty returns. That was positive. So 1 to 3 years and above तो सर पॉजिटिव है। 1 to 3 years के लिए क्या देखना चाहिए सर? तो मीडियम टर्म में हम ईपीएस नंबर देखते हैं जो निफ्टी 50 कंपनीज है, एंड व्हाट इज द रीजनेबल पी लेवल, एंड वी ऑलवेज लुक एट फॉरवर्ड अर्निंग्स। तो फॉरवर्ड अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड टू सर ग्रो एट 11 and 14%। सो वहां पे ग्रोथ है सर। उससे मुझे सर पी मल्टीपल भी देखा, तो हमने रिलेशन देखा कि बॉन्ड यील्ड्स और पी मल्टीपल में क्या मूवमेंट रहा है। So if the interest rate regime is low, the average reasonable PE is 19.6 for Nifty. So उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आज सर पता चलता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव।
तो सर करंटली तो सर मार्केट का अभी का करंट लेवल जो है रीजनेबल लेवल है वो 22,800 है, बट हम तो एक साल या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साल डाउन द लाइन व्हाट शुड बी द लेवल, वी शुड लुक एट द अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर। तो मार्च 25 का सर नंबर लगता है 26,000, so that is approximately 13 to 14% growth from the current level, so even that is something which is looking positive. And again EPS numbers ऐसा नहीं है कि साल में आते हैं, every quarter the numbers are last, मतलब yesterday I think so the cycle ended, so even that update is there, so ये number हो रहा है कि नहीं हो रहा है 1164 का या 1326 का, it is not that we'll come to know at the end, right? Every quarter we will have an update ki is this on track or not, this growth is happening or not, because last year we've seen that the number has been higher. We were expecting around 18%, but the number is 25%. So the number was better, right? So that's why the market is also showing that strength and stability. So this number is also something which we'll be tracking. So ऐसा नहीं है सर कि ये एक बार देख लिया और कुछ नहीं, ये नंबर भी ट्रैक करेंगे. If the number is better, of course the market will react. If the number doesn't come as per the expectation, of course वो उसके लिए भी हमें समझ में आ जाएगा कि यार क्या प्रॉब्लम है या क्या, how the market will impact. So these factors are something which we can keep on discussing, and these are something which are available in the public domain as well. So medium term outlook also is positive. Now short term is of course on news, events and sentiments, right? So recently domestic events are positive, global events have been neutral, right? The major impact which is impacting the market currently is the elections. कि election का number जो है, that is I think so the most awaited event today if I look at, right? कि election में क्या होगा. Of course today is the last day of the poll, and then by 4th we'll have the number कि वो क्या होगा, which government will come into power or not. So events का जो point है, what we've seen is that on an average market short term में अगर जब भी correct होता है 10%, मार्केट रिकवर्स वेरी फास्ट, मतलब 2 to 4 months में मार्केट वहां से रिकवर हो जाता है. सो इवेंट्स कैन बी एनी, it can be the Israel Hamas war, or it can be the elections, or it can be the budget, or it can be any other event. What we've seen is that generally normal event में अगर 10% correct भी होता है market in a year, the recovery is within 2 to 4 months. मतलब suppose 23,000 से अगर 10% correct हुआ, तो मतलब 23,000 से अगर 20,500 भी होता है, 20,500 से फिर से 23,000 क्रॉस करने में वो 2 से 4 महीने में क्रॉस भी कर लेता है. सो द रिकवरी इज समथिंग व्हिच हैज बीन वेरी फास्ट. And I'll also show you one more data point of the last election. So I think so currently we are in the mix of the election results only. So जो mandate 24 का जो है उसमें हमने एक और डेटा पॉइंट डाला है which again highlights कि यार अगर शॉर्ट टर्म इवेंट अगर वैसा हुआ भी तो what was the impact and how the markets reacted. So short term again it is dependent on events, news. What we've seen is कि अगर 10 या 15% करेक्ट भी होता है, मार्केट का रिकवरी जो है वो 2 to 4 months में हो जाता है. तो इवेंट्स वी कांट कंट्रोल, वी डोंट वांट टू प्ले द इवेंट्स बिकॉज नो वन नोज के कितना करेक्ट होगा. रिकवरी इज देयर 2 to 4 months. So when I'm invested, I think so I should stay invested. And if there are corrections, I think so I can utilize those opportunities to buy more rather than waiting. Waiting is something which is it's a very difficult game. आप वेट कर सकते हो कि यार नहीं मार्केट इलेक्शन है तो मैं वेट करता हूँ, कोई ना कोई इवेंट आते रहेगा और आप वेट करते रहोगे, राइट? आई थिंक सो द स्ट्रैटेजी इज दैट आप रीजनेबल लेवल देखो, अगर रीजनेबल लेवल के एंड पे है मार्केट तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन, यूज दैट एज अ पैरामीटर रादर देन जस्ट वेटिंग कि यार नहीं ये इवेंट है तो मैं वेट करूंगा, ये इवेंट है तो, बिकॉज द इवेंट्स विल कीप ऑन कमिंग. दिस इज नॉट समथिंग यार एक इवेंट खत्म हो गया तो और कुछ नहीं होगा, इवेंट्स आते रहेंगे. So rather than waiting, I think so अगर वैसा कुछ आता है and if the client has liquidity, you can invest more at that point rather than just waiting on the sidelines, because that doesn't help, right? Because market will not wait. We can wait, but market will not wait for anyone. So वो strategy जो आप अगर अपना रहे हो कि नहीं मैं sideline में wait करता हूँ कि नहीं आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, we've seen that market doesn't wait for anyone. So point is have a strategy and you stick to that strategy, and उसके ऊपर अगर अपने पास opportunity और आती है तो I think so we can utilize and capitalize on that opportunity rather than basing a strategy wait only on waiting. I think so that doesn't help, and last 3-4 years अगर देखेंगे तो that strategy has not helped at all, right? So long term, medium term, short term market view is I think so which I wanted to highlight. You can use this note extensively when discussing with clients. It's a very simple note and the data points are something which are very easily available in the public domain जो आप देख सकते हो,
and you can also keep a track, and even the client can keep a track. So that's on the note. Coming to the short term and the आज जो हम इवेंट का वेट कर रहे हैं, तो हमने एक मैंडेट का है ना एक नोट निकाला था इन जून 23 कि इलेक्शन ईयर है. तो हिस्टोरिकली व्हाट वी डिड इज वी लुक्ड एट द पास्ट 5 सेंट्रल इलेक्शंस फ्रॉम 99, 2004, 2009, 2014 एंड 2019. हमने चेक किया कि यार हाउ द मार्केट बिहेव्स. जनरली इलेक्शन इज अ बिग इवेंट, राइट? 5 इयर्स में एक बार होता है, तो ये मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. तो हमने लास्ट 5 इलेक्शंस का एनालिसिस किया था. व्हाट वी डिड इज वी लुक्ड एट कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ पोल है उससे 6 महीने पहले निफ्टी का क्या लेवल था, और ये फर्स्ट डे ऑफ पोल के 6 महीने बाद का निफ्टी का क्या लेवल है, राइट? तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू चेक कि हाउ द मार्केट बिहेव्स ड्यूरिंग दी 1 ईयर, मतलब 6 months प्रायर टू पोल, 6 months पोस्ट पोल, हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. Now 99, 2004, 2009, 2014, 2019 ये 5 साल के इलेक्शंस है. तो इस 5 साल में not everything has been according to plan, right? 2004 was an event जहां पे मार्केट में एक्सपेक्टेशन कुछ और था and the party which came into power was someone else, right? So not everything has been positive. But ये 5 साल में अगर डेटा देखे तो 1 year का रिटर्न, that is 6 months prior to poll and 6 months post poll, the lowest returns which market has delivered is 11%. The highest returns is 55%, 56%. तो ये तो फर्स्ट डेटा पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इलेक्शन का ईयर जो है, there is a lot of hype and there is a lot of discussion which happens with the clients, within the clients and within the partners as well, कि यार मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा. बट डेटा तो ये बता रहा है यार कि मार्केट इलेक्शन ईयर में तो रिटर्न्स डिलीवर दिया ही है, नेगेटिव तो कभी नहीं हुआ है. मिनिमम 11% है, मैक्सिमम 56% है, right? So one data point, crucial data point and takeaway is that was election year, market has always delivered, right? Current scenario देख लेते हैं because poll date, the first poll date was 19th April. उससे अगर 6 महीना पहले देखे तो निफ्टी का लेवल था 19,625 एंड निफ्टी ने फर्स्ट डे ऑफ पोल तक कितना रिटर्न दिया है? 13% का रिटर्न तो डिलीवर कर दिया था. So what we've been looking at data points for the last 5 years, last 5 elections basically, करंट इलेक्शन ईयर में भी अगर देखे 6 मंथ प्रायर टू पोल तो मार्केट ने 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया है. सो दिस इज इन लाइन विद द हिस्टोरिकल मार्केट बिहेवियर. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने कुछ अलग किया है. ये डेटा पॉइंट्स हमने ऑफकोर्स जून में शेयर किया था एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस. लास्ट 6 महीने का अगर डेटा भी देखे तो इट इज सपोर्टिंग दैट सेम डेटा पॉइंट दैट मार्केट हैज डिलीवर्ड 6 months प्रायर टू पोल. इट हैज डिलीवर्ड 13%. So that is of course very clear. Now moreover of course अभी the decisive factor is कि यार mandate किसको आता है, that would decide the further upside in the market as seen in the previous elections. So यहाँ पे भी है ना, what we did is we analyzed that what is the possible outcome कि क्या हो सकता है 2024 में. One is that of course the Narendra Modi led BJP coming to power. The other is the multi-party coalition coming to power. Now what we did here is we looked at the most probable outcomes, and what we did is we studied the state elections of the last 9 years, right? State elections. So out of 51 मतलब state elections जो हुए हैं since 2014, general elections के बाद जो 51 state elections हुए हैं, we have come to a conclusion that 86% of the times the result indicates that voters have a very logical outcome. मतलब ऐसा नहीं है कि totally unexpected है. The party which has worked, और पार्टी ने जिसने ग्राउंड पे काम किया है एंड हु हैज वर्कड फॉर द डेवलपमेंट, दैट पार्टी इज जनरली वोटेड. सो इट इज नॉट दैट हर जगह एक ही गवर्नमेंट आ रही है, वैसा नहीं है. लॉजिकल वोटिंग इज समथिंग व्हिच वी हैव सीन. इट्स लाइक स्पेसिफिकली देखे अगर रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, तो कर्नाटका वाज वन आई थिंक सो वेयर द बीजेपी डिडंट कम टू पावर, राइट? सो इट इज नॉट दैट इट इज अ वेव और समथिंग. अगर नहीं काम किया है तो बॉस दैट पार्टी इज नॉट कमिंग इनटू पावर. So that is also something which is there, and 86% of the times अगर देखे वो outcome वैसा ही था, that we have observed that there is logical voting. So based on that, currently it is quite logical that the Modi government retaining and coming to power in the third term as well. Of course, a decisive outcome which if it comes in the favor, is likely the government and the market might appreciate that more and rejoice more. That is something which we'll come to know on
4th, but logically it looks like that the government, the Narendra Modi government comes to power. The other option, agar this government doesn't come to power, right? And agar coalition aata hai, so that is something which happened in 2004. That everyone was expecting, I think so, the Atal Bihari led NDA government comes to power, but it didn't come to power. उस टाइम पे क्या हुआ था मार्केट में? I think so this data point is something which is very important. See, we assign a lot of importance to an event, बट वो इवेंट को टोटलिटी में देखना चाहिए. हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, राइट? वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स. वी आर टेलिंग द क्लाइंट दैट सर 5 साल के लिए रुको. तो ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है इन दैट 5 year जर्नी? आई थिंक सो दिस डेटा पॉइंट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. सो 2004 वाला जो रिजल्ट था दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. सो निफ्टी रिजल्ट के पहले 13th मई को रिजल्ट था, तो रिजल्ट के एक दिन पहले निफ्टी वाज 1711 था. रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम फॉल जो हुआ, उसके बाद 17 मई 2004, मतलब विद इन 3-4 days निफ्टी फेल टू 1389. मतलब ऑलमोस्ट 19% ड्रॉप हुआ फ्रॉम द डे ऑफ द रिजल्ट. मतलब रिजल्ट के पहले जो लेवल था उससे ऑलमोस्ट 19% ड्रॉप हुआ. पर आफ्टर 4 months, मतलब 16 सितंबर 2004, निफ्टी अगेन केम बैक टू 1711. मतलब जो 20% ड्रॉप हुआ था, ऑलमोस्ट 19% जो ड्रॉप हुआ था, वो 4 महीने में रिकवर हो गया. Right? What this data tells me, see, that everyone is discussing यार which government will come to power, क्या नंबर होगा क्या नहीं होगा. किसी को बैक ऑफ द माइंड वो भी डर है यार कि नहीं आएगा ये नंबर. So this event, of course, if we take something from the past, 2004 was a similar case where everyone was expecting and the number didn't come in. Market reacted, of course it reacted, it dropped by 20%, but recovery was in 4 months. So as an investor, when we are investing for long term. We are not investing for a month or a 2 month or a 3 month. 4 महीने में तो recover हो गया, right? So what this says is that historically, whenever a new government comes to power, it doesn't make policy measures with retrospective effect. मतलब past का कोई change नहीं होगा, होगा तो जो भी prospective होगा आगे से होगा. So directionally, that would not have a major impact on corporate revenues and profit expectations. That's what this data is saying, boss, that रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट में जाके कुछ नहीं होने वाला है. फ्यूचर जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वहां पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है. सो इन केस ऑफ इलेक्शन का रिजल्ट अगर मार्केट से कॉन्ट्ररी भी आता है, आई थिंक सो देयर इज नथिंग, देयर इज नो नीड टू पैनिक. वी शुड होल्ड ऑन टू आवर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज द मार्केट ट्रेंड रिवर्सेस विद इन अ फ्यू मंथ्स. सो पॉइंट इज दैट if expectation से आता है and the number comes better, that can be a driver. If it doesn't come as per expectation also, there is nothing to panic. It is not that it's going to end. Last elections का जो ये डेटा दिखा रहा है 4-5 months में market recover होता है and it rebounds. We can stick to our strategy. So point is that stick to your strategy. जो भी अपना asset allocation है, 60% mutual funds, 40% structure. I think so we should stick to that strategy, and that strategy is something which would help in taking the client to his long-term wealth creation journey and his goals. I think so. Event, of course, events तो आएंगे, and it is of course a big event, but this should not derail or decide my allocation. I think so. Allocation is something which should be decided, and we should always fill in the gaps. We should not try to move that allocation based on the market events, because events will keep on coming. And if it's positive or negative, I think so data suggests that was market का जो direction trend है, जो GDP के numbers है, after the election, I think so everyone will start talking again on the economy, how the economy is growing, how the corporates are growing. I think so that is something which has taken a backseat for the last month and a half, and last 10 days. I think so volatility भी बहुत ज़्यादा हो गई है. Everyone is talking on the elections, but I think so once this number is out, whatever the result is, I think so again we would start discussing on the economy, which we discussed in the equity view, on the GDP numbers, the inflation numbers, the fiscal deficit numbers, the tax collection numbers, the EPS numbers, the PE multiples, and that will decide. And all those factors actually indicate a very positive trend. We are positive on the equity from the medium term to the long term perspective. So if we actually show this, कि हम अगर client को दिखाते हैं, and if we can explain this to him, I think so he would relate more, and you will be able to actually make an informed decision for him.
right? Based on data rather than subjective factors. I think so subjective factors doesn't hold value. They are very hollow. We should avoid this when you have these data points. I think so we should use these data points effectively to actually convey and inform and convince the client that how he should invest and stay on the strategy and stick to his investment strategy of mutual funds and structured products. So that's it on my side. I just thought I'll cover these two notes. These two notes are something more relevant. We've been discussing the equity market view. Of course, there is a regular update and we'll keep on updating that. I hope I've been able to explain the data points so that even you are able to easily understand and आप आपके clients को भी बता सकते हो, right? And that would help. The presentation is there with the BDMs. You can definitely share. You can take it from your BDM. It is there with him, right? And you can definitely utilize these notes. So I'll open the floor for questions. Any questions you can put it in the chat box and I'll be happy to take them. Yeah. Thanks. Vishal, I saw your message now, but probably in the next, whenever the next presentation is, I think so I'll use that so that it helps in giving you. I think so the cursor is not something which is visible to you, but I'll definitely use that next time. Thanks, yeah, Vishal. Any questions you can. Yeah. So I think so. There's one question on the basis for the EPS. So EPS number is something where we've looked at, of course, the Bloomberg estimates also, but it's an Anandrati estimate. So we have our internal estimates. There's a team which actually does this. So we have this, of course, basis the Bloomberg consensus. So Bloomberg consensus is basically where Bloomberg looks at the multiple uh, analysts across the industry and उसके ऊपर एक consensus create करता है. We've looked at the Bloomberg consensus estimates also and in discussion with our Insti equity as well. We have come out at a number which is the growth number, which is mentioned in the presentation. So that's the basis. Of course, Bloomberg consensus. So Bloomberg consensus is basically the industry. Industry क्या expect कर रही है? उसके ऊपर what is my expectation on say a particular benchmark? उस पे हमने हमारा analysis use किया है and that's how we've arrived at the number, right? Of course, the GDP number is also something which is taken into impact. So there are multiple factors, right? But that's how the growth expectation is coming for the EPS number uh, this year and the next year. We can share these notes with customers and prospects. Of course, we can share this, but I think so. Rather than sharing, I would suggest that you discuss it with him, and after that you can share it because see, there's a lot of data points in this note. If I just share this note, I think so it would not be that effective. If you can actually discuss some 4 or 5 points and then share it, I think so that's how it would be much more relatable and effective for the client also to take that. सिर्फ आप नोट भेज दोगे तो सर मेरे हिसाब से it might not be that effective. That's my perception that don't directly share it because there's a lot of data points. उसको बोलेगा बहुत डेटा है शायद नहीं समझ में आएगा इसीलिए. Can you explain the P multiple relating to interest rate again? So interest rates, see, interest rate is a critical. So all the markets are connected. So the debt market, the equity market, there is impact, right? So inflation से भी impact होता है interest rate पे. So interest rate, so inflation अगर कम हो गया, so generally the government will not increase interest rate. They will try to reduce the interest rate, right? Because
inflation is under control. So if the interest rates come down, now वैल्यूएशन जो होता है, जैसे मैं बात कर रहा था इक्विटी वैल्यूएशन, तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए ऑलवेज द फ्यूचर इज डिस्काउंटेड, राइट? वी ऑलवेज लुक एट द फ्यूचर, पास्ट इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस. तो अगर कोई एनालिस्ट कोई इक्विटी कोई स्टॉक को वैल्यू करता है तो वो उसकी फ्यूचर की अर्निंग्स देखेगा, फ्यूचर का कैश फ्लो देखेगा, फ्यूचर का सेल्स देखेगा, उसके क्या कॉस्ट लगेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है. एंड ही विल नॉट लुक एट ओनली 1 year, ही विल लुक एट 2, 3, 4, 5, 10 years, बिकॉज कंपनी विल कीप ऑन गोइंग, राइट? कंपनी बंद नहीं होने वाली, राइट? कंपनी तो चलती रहेगी. सो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, मतलब फ्यूचर की अर्निंग्स को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा, मुझे आज की वैल्यू पता चलती है, राइट? मुझे फ्यूचर की अर्निंग्स जो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा तो मुझे आज की वैल्यू पता चलती है. सो ये आज की प्राइस पे लाने के लिए व्हाट डू आई यूज द इंटरेस्ट रेट. तो सपोज फ्यूचर में मुझे 100 रुपया मिलने वाला है, एंड अगर इंटरेस्ट रेट सपोज आज 7 है, तो इफ यू डिवाइड 100 बाय 1.07 यू गेट 93 रुपीज, राइट? ये 100 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो मैं अगर वो डिवाइड करूं 1.07, बिकॉज करंट इंटरेस्ट रेट से ही डिवाइड होता है, तो मुझे 93 मिलता है. अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो 100 डिवाइड बाय 1.06, अगर 1% से कम हो गया, मतलब 7 का 6 हो गया, तो आप 100 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो यूल गेट 54, मतलब आपको करंट वैल्यू ज्यादा मिल रही है. सो we've looked at that correlation that whenever the interest rates come down, the market valuation increase. So यही हमने प्रोजेक्ट किया वहां पे कि इंटरेस्ट रेट देखा 10 year जीसेक, एंड उसी टाइम पे मार्केट का फॉरवर्ड पी मल्टीपल क्या था. सो दिस ट्रेंड अगेन, जो जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो पी मल्टीपल और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन भी दिख रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, द पी मल्टीपल हैज इंक्रीज्ड. Currently where we are in, here also we are in that the interest rates might not come down immediately. बढ़ने का तो नहीं लग रहा है, but it might not come down immediately, but I think so at the year end or next year the interest rate might come down, right? So if in that range the P multiple जो लिया है हमने, मतलब P multiple के लिए भी लॉजिक लगाया है कि इंटरेस्ट रेट रेजिम से मैं फॉरवर्ड P multiple क्या चलता है, अगर मैं ये भी लॉजिक दे सकता हूँ क्लाइंट को, सो दैट्स व्हाई दैट वाज एन द एडेड पॉइंट व्हिच वाज देयर, दैट ये मैं अगर लॉजिक देता हूँ तो क्या होगा. सो करंट जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे वी फील 19.6 इज द P multiple. That's also a reasonable P multiple which the market should trade. So that's how the relationship has been built. Of course, as if the interest rates actually come down, I think so there would be further scope of P multiple re-rating, which can happen. We are not factoring that. We've taken a conservative number there as well, right? कि 19.6 लिया है. If the interest rates do come down, the expectation is that it might not come down immediately. It might come down later, right? But this is something which it can happen. And वो एक लॉजिक बिल्ड किया है कि यार जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो पी मल्टीपल हाई होता है. पी मल्टीपल हाई होगा मतलब मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा सर, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज विच वी आर देयर इन करंटली. मतलब मैं आज जो एनवायरमेंट में हूँ, दैट इज ऑल्सो एडिंग माई इक्विटी मार्केट. Impact of GSEC going globally. See, there are global, there are multiple factors. So US, of course, Fed is something which, तो वहां पे धीरे धीरे चेंज हुआ है. इंटरेस्ट रेट का जो कट का एक्सपेक्टेशन था, व्हाट वाज देयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इज नॉट देयर करंटली, राइट? द कमेंट्री इज दैट द इंटरेस्ट रेट वुड बी कट, बट देयर माइट बी अ सिंगल कट और अ डबल और अ 25 बिप्स और 30 और 50 बिप्स. दैट्स द क्वेश्चन, राइट? बट वहां पे भी ऑफ कोर्स द डेटा पॉइंट इज समथिंग व्हिच हैज बीन ट्रैक्ड कि भाई डेटा पॉइंट क्या दिखा रहा है, इन्फ्लेशन नंबर क्या दिखा रहा है. इफ द इन्फ्लेशन नंबर इज इन कंट्रोल, देन ओनली द इंटरेस्ट रेट्स माइट बी कट. At the start of the year, I think so the rate cuts expectation was very high, but slowly and steadily that has toned down, right? That's why the GSEC yield जो है वो काफी stable था सर. Post the RBI number only, the yields have slightly dropped, right? So expectation is that if there is rate cut, I think so the GSEC yield will drop further in India as well, and that's again a positive for the equity market. Strategy of 65-35-20, generally private wealth does a 65-35, 65 mutual funds, 35 structure, right? 20 is something which they do is they leverage it basically. एक leverage का strategy है उनका for structure.
So, but there the ticket size is higher. So we generally stick to a 60-40. That's the strategy which we adopt, Vishal. I mean, Indian GSEC going globally. So, sir, I think so. That's a long shot, sir. So, again, sir, see these things. There we can talk a lot of things, sir. But I think so. The crucial point is that where the GSEC is heading in India, कि वो कहाँ जा सकता है. So our expectation was that it can go to 6.5, and that's how it is positive for the Indian equity. GSEC going global, and also I think so. It's a long shot. Multiple things can happen, but of course the impact will be positive only. But too early to say anything, sir. There. Vishal, we'll take this separately, Vishal. We don't do leverage. There's a ticket size constraint, and specifically, it is done for only a few clients in private wealth. So we can discuss this offline. Any more questions, partners? We can mention that, Vishal, that sir, 65-35, 60-40 is the strategy which we adopt at a lower ticket size, sir. 65-35-20 is a ticket size where minimum 10 crores is required. That's where we can adopt a strategy. We can, and that's a leverage strategy. I think so. This much is enough. I think so. There are a lot of data points, Vishal, which we can discuss in the note. So we can give a small flavor to it that there's a ticket size constraint there, sir. So 65-35 or 60-40 is something which we adopt. So, so there are no further questions. So thank you, partners, for patiently listening. Uh, we would conduct the third session mostly, I think so, on ideally on 15th, or if there is before, I will put it in the group. Right, that would be on the marketing activities which we can do to increase the number of leads which we can get to get more clients. Right, ultimately, see, as a distributor, our role is to get more clients and get more money from existing clients and get new clients, right? So getting new clients, most of the partners actually depend on the referral strategy. That's a good strategy. Of course, we should uh, be dependent on that, but there are other ways and means through which also you can actually get more leads and get more clients. That's where we help. So what activities which we can do regarding marketing, which can help you get more leads and get more clients, right? And increase your base to ultimately help in increasing your business, right? So that's the third session which we would do. I would mention the date. The note, I think so. I have explained it. Kindly use this note. It's a simple note. You don't need to explain in the detail which I explained. I explained this to you in detail so that you understand it. You can phrase it in your way. But 4 or 5 points, I think so, in each term, the medium term, the long term, and the short term. I think so. We can discuss this simple data points. When if we speak data, I think so it definitely creates an impact. Rather than being subjective, if we actually focus and give data points to the client, I think so that is something which is valued by the client. And these are easy to remember, easy to track data points. ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा हो जो client नहीं track कर सकता है independently, right? So वो definitely help करता है. And अगर आप ये tone में बात करोगे तो definitely you'll be able to get more monies also from the client, right? That's the ultimate objective, and you can help him actually grow his wealth. So that was the objective, and that's the note. So thank you, partners, for patiently listening, and I hope you have understood this. So thanks, and have a great weekend. Thank you.